महिला विश्वविद्यालय कन्नड़ सभा भवन नई दिल्ली में लाडली फाउंडेशन, जिला प्रशासन, कर्नाटक राज्य अक्का महादेवी महिला विश्वविद्यालय, विजयपुरा। लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट, नई दिल्ली द्वारा 16 लाख की लागत से एआई तकनीक से युक्त हाईटेक शौचालय के निर्माण कार्य का शिलान्यास करते हुए लाडली फाउंडेशन की स्वच्छता दूत कुमारी शिफा ने कहा कि अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं का सीधा असर स्कूल कॉलेजों में लड़कियों की शिक्षा पर पड़ता है। कई लड़कियां उचित सुविधाओं के अभाव के कारण मासिक धर्म के दौरान स्कूल छोड़ देती हैं। इससे न केवल उनके शैक्षणिक प्रदर्शन पर असर पड़ता है बल्कि स्कूल छोड़ने की दर भी बढ़ जाती है। सरकार और विश्वविद्यालयों को महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अच्छी स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने पर अधिक जोर देना चाहिए। हमें व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित प्रथाओं का अभ्यास करना चाहिए। ये बैक्टीरिया, वायरस और बीमारी को दूर रखने में मदद करता है। साथ ही हमें कहीं भी कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए और दूसरों को भी कूड़ा नहीं फेंकने देना चाहिए, ताकि हम स्वच्छता बनाए रख सकें। जावेदा जमादार ने अपने विचार व्यक्त किए। समृद्धा महिला विश्वविद्यालय की डीन प्रो शांता देवी, जिला एनएसएस नोडल अधिकारी प्रकाश राठौड़ा, विश्वविद्यालय शिक्षा विभाग के प्रो विष्णु शिंदे, जिला युवा अधिकारी राहुल डोंगरे ने संबोधित किया। डॉक्टर अशोक सुरपुर, डॉक्टर उदय कुमार कुलकर्णी, प्रोफेसर प्रजापति, प्रोफेसर देवी लक्ष्मी, डॉक्टर अश्विनी उपस्थित थे। A human needs food, a human needs wealth for the well-being, for the future. But the major factor is the sanitation and hygiene which they maintain for themselves. If there is no proper hygiene in their body, that might lead to many other diseases having been affecting them in the future. You might not know, but there are a lot of it. And what is sanitation? What is exactly sanitation? It is the most crucial and the very important nation to humans who might look fit and fine, but actually not fit and fine. Internally, a lot of diseases attacking. For example, not about here, but about our survey about the government schools, where there were no sanitation facilities, there were no washrooms for the girls. The girls are there, they had to go out of the school in the open area to relieve themselves and to relieve the bladder pressure. That created a lot of distress in them. Not only it just affected the concentration in the class. Like you are sitting in the class, you have a lot of bladder pressure, and just imagine you are in a class, you have a bladder pressure, and you have the urgency to use the washroom. But the problem is, the washroom is far. Or else, there is no washroom at the place. Then what would you do? That would create a mental distress in yourself that may, hindering your concentration in the class. You would not think whatever is happening in the class. Your main problem is you have bladder pressure and you need to search for a washroom, or else go in the open. Going in the open areas, that might not look as a huge problem to the people over here, but it is the most biggest problem. Because going in the open, there you might not realize, one might not realize the amount of bacteria developing over there. Those bacteria directly or indirectly affecting your bladder. One might not know at the exact point that the bacteria has affected me. Like you would think it is just a matter of 1 or 2 seconds or few seconds. Then how will it affect me? It really does. Bacteria require 0.01